Assalamu alaikum students. In today's lecture, you will learn about the derivation of the van der Waals equation, which is related to that of the correction factors to the ideal gas equation. Then we will discuss the Dalton's law, and if we will have the time, so we will also discuss the Graham's law. Right? So the first one gives now students, this first one equation, that is van der Waals equation, that is used for the correction factors to ideal gas equation, that was introduced by van der Waals, who corrected it in such a way that it is not only applicable to the ideal gases, but it is also applicable to the real gases, right? If you remember, we have learned in the previous lecture that at the high pressure and at the low temperature, or in a very compressed state, the gases, they do not behave ideally, right? So they behave non-ideally. We call them as the real gases, right? For this regard, we got two of the KMT postulates wrong or faulty. They were: number one, that there are no attractive or repulsive forces between the particles of gas. Second one was the actual volume of the gas particles is not negligible, right? While KMT says that the volume of the gas particles, that is negligible. So there is done the correction of these two postulates in this van der Waals equation. This is a very now, in this regard, the first one is the volume correction. Remember it, as I told you earlier, that this theory is applicable when the gas is present in highly compressed state. Otherwise, when it is uncompressed, the gas will behave ideally, but it will behave non-ideally or as a real gas when high pressure is applied or the low temperature is applied. So this is the highly compressed state when we have to make the corrections in this the equation, that is the general gas equation. You know very well what the general gas equation is. PV is equal to nRT. Remember it fully, right? Now, according to the van der Waals, van der Waals thought that some of the volume of the vessel is occupied by the molecules of the gas, and the volume is not available for the free movement of the molecules. Here you can say, in a large one bigger room, there are present some of the particles. These particles, they are having some mass. तो उस पूरे एरिया में से जो कि उस कंटेनर के अंदर that is present, just subtract the mass of, or you say what the volume occupied by these gas particles. Gas particles ने जितनी space occupy की हुई है, वो space उनको available नहीं है for the movement, right? So this one is the excluded volume. This one is the excluded volume, right? So it says that we need the free volume of the gas, and that is obtained then when we subtract the individual volume of the gas molecules from the volume of the vessel, right? So the volume that is free volume, that is equal to the, or this is the volume which is available to the molecules or the atoms of the gas particles to move in that container, that is equal to V vessel, that is the volume occupied within the whole of the vessel, minus the volume occupied by the gas particles, right? Now, the volume occupied by the gas particles is considered as, that is NB, that is equal to NB, where B is the individual volume of 1 mole of the gas molecules and N is the total number of the moles of that gas molecules. Listen it again carefully, that B जो है वो एक गैस पार्टिकल है, उस 1 मोल के अंदर हर एक गैस पार्टिकल का इंडिविजुअल वॉल्यूम है, राइट? और n आपको क्या बताता है? It tells you the total number of moles of the gas particles present within that, what you say, container, right? Or that vessel, right? So V molecule is equal to जितने number of particles हैं 1 mole के अंदर
or whether you have 2 moles or 3 moles, whatever the mole number is there, जितने particles उसमें contained हैं, the volume of them, that is considered as the volume of the molecules, right? So you can write the above equation like this, that V is equal to V vessel minus NB, right? Now B is the effective volume of the gas molecules. Listen it carefully. It is not the actual volume of the gas molecules. कंप्रेस स्टेट में आप खुद सोचें, कंप्रेस स्टेट में जब हम बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स वो दे आर इन द सराउंडिंग ऑफ द अदर्स एज वेल, दे आर ऑलरेडी इन द कंप्रेस्ड फॉर्म, वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा। अभी तो वो एक तरह की कंप्रेस्ड फॉर्म में, जब कंप्रेस्ड फॉर्म में और फ्रॉम ऑल अराउंड द साइड्स, सो व्हाट विल हैपन, वो एक श्रिंकन वन वॉल्यूम आपके पास में आ रहा है। जो ऑक्यूपेशन आपके पास में उन मॉलिक्यूल्स की है वो श्रिंकन वन वॉल्यूम है, लेकिन अगर हम उनको बिल्कुल फ्री ऑल अलोन छोड़ दें तो उनका वॉल्यूम 4 गुना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दे आर प्रेजेंट इन द कंप्रेस्ड स्टेट, राइट? सो दिस इज गिवन एज दैट द एक्चुअल वॉल्यूम of the gas molecules is 4 times the actual volume of the molecules, right? Now it is given that is B is equal to 4 Vm, but it is calculated from some other source, ये उसमें physics में या mathematically it is solved for the considering the spheres of that but जो आपके पास में molecules हैं उनको spherically consider करते हुए ये calculate किया गया है। You just have to remember, क्योंकि हमारे पास derivation is not required, so I'm not going for it. You just have to remember the value as such that V is equal to 4 Vm, that 4 times the volume आपके पास में जो है वो इन मोल के नंबर ऑफ मोल जो पार्टिकल्स हैं इनका वॉल्यूम आपके पास में 4 times ज़्यादा है as they are occupying in that compressed state, right? So Vm is the actual volume of the gas molecules for 1 mole of the gas. Okay, now this is what we have done the correction, that you can write it as V is equal to V vessel minus NB, और यहाँ पे आप B की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, B is equal to 4 Vm, otherwise it is not required, ये हम utilize नहीं करेंगे। B is equal to 4 Vm, it is not applied further in the corrected one form, right? Or in the numericals you have done in this exercise. Okay, now second one is the pressure correction. In this pressure correction, first of all you should know what is pressure which is exerted by the gas particles. Gas particles, they exert pressure when they strike with the wall of the container, as pressure is the force per unit area, right? You know very well, in a low zone area or in a container, the gas particles, when they are apart from each other, they are randomly moving, they have no attractive forces between them, so that what happens, they with the full force or with the kinetic energy they hold, according to that they are striking to the wall of the container. Now consider we have reduced the volume by increasing the pressure upon that container. अब क्या हुआ, the spaces between the molecules that become reduced कम हो जाएंगी। अब क्या होगा, the particles, they are closer to each other. When the particles are closer to each other, kinetic energies, they become reduced of the particles. Now what happens here, the particles which are present in the vicinity, they are closer to that of the molecules which are going to hit to the wall of the container. तो क्या होगा, attractive forces develop होंगी जिसकी वजह से the molecule which is in the position to hit to the wall of the container, that is attracted from the back side from the particles which are present in the interior of the container, right? अब the force by which it should strike to the wall of the container, जब वो बिल्कुल free होता, it is quite less, क्योंकि ये पीछे से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इसको उसको भी निगेट करना है, जितनी जो फोर्स ये पीछे भी तो अप्लाई कर रहा है टू विड्रॉ दीज फोर्सेस, जो अट्रैक्टिव फोर्स ये आ रही है इसके लिए, उसको इसने ब्रेक करना है, फिर कहीं जाके ये बॉल को हिट करेगा, तो कुछ फोर्स तो इसकी यूटिलाइज होगी पीछे टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स, और फिर बाकी ये अप्लाई करेगा टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, राइट? सो इन अ कंप्रेस्ड स्टेट में व्हाट द प्रेशर इट कैन अप्लाई, दैट विल बी लेस than the pressure it applied when it was free in a low pressure zone area, right?
Now here it is given that the P observed is equal to Pi minus P bar, right? Now P observed ये क्या चीज है और P आइडियल क्या चीज है ये आपके पास में, और P लेसेंड क्या चीज है, दिस वन। P आइडियल तो वो है जो कि यूं समझें लो जोन एरिया में जब सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे वर प्रेजेंट, तो वो जो फोर्स पर यूनिट दे रहे थे या प्रेशर जो जनरेट कर रहे थे, दैट इज द आइडियल प्रेशर, राइट। पी ऑब्जर्व वो है जब वो हाईली कंप्रेस स्टेट में है और द फोर्स, जितनी फोर्स आप वो अप्लाई कर रहे हैं टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो आपके पास में कहलाएगा पी ऑब्जर्व्ड, राइट। और पी लेसेंड जो है आपके पास में वो है जो कि इन दोनों का डिफरेंस है, पी आइडियल और पी ऑब्जर्व्ड का। रिमेंबर इट, पी आइडियल वो प्रेशर है जो कि लो प्रेशर जोन में गैस पार्टिकल्स वर एक्सर्टिंग, राइट, क्योंकि वो दूर थे एक दूसरे से, स्ट्राइक कर रहे थे टू द वॉल ऑफ द कंटेनर विद देयर फुल काइनेटिक एनर्जी के साथ में, सो वो प्रेशर आपके पास में ज्यादा है। लेकिन व्हेन दे आर इन द कंप्रेस स्टेट, जिसको हम पी ऑब्जर्व की फॉर्म में कह रहे हैं, तो देन द प्रेशर इज अ लिटिल बिट लेस, क्योंकि वो तो कंप्रेस स्टेट में, तो पीछे से अट्रैक्टिव फोर्स को भी ओवरकम करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जितनी फोर्स इनको जाके स्ट्राइक करना है टू द वॉल ऑफ द कंटेनर वो तो कम हो जाएगी, राइट। तो P observed आपके पास में वो है when the particles or the molecules of the gas they are in the compressed state, right। और P lessened जो है वो डिफरेंस है इन दोनों का, that P ideal minus P observed, which will give you that how much pressure जो है उसका कितना फर्क पड़ा है, कितना प्रेशर आपको जो है वो कम मिला है, ठीक है, कितने फैक्टर से ये आपके पास में कम हुआ है। This is what we say is the P bar, right? So here it is given, P observed is equal to P ideal minus P lessened. You can rearrange this equation like this, that P ideal is equal to P observed plus P bar, right? Here it is given, ठीक है जी। तो आइडियल जो प्रेशर आएगा वो इन दोनों का एडिशन होएगा, P observed का और P bar का। There will be a plus sign between these two. There will be a plus sign, not a minus sign. Okay, it is wrong. जब P observe के लिए P I और P bar में जो होगा वो माइनस साइन होगा, लेकिन यहाँ पे P ideal, P I represents ideal pressure. P I will be equal to observed pressure plus the pressure lessened, right? Now, what the pressure correction done in net? We are considering, हम इसको नाम दे लेते हैं जो particles inside the compressed state में हैं। A is the particle which is going to hit to the wall, the container, force तो इसने apply करनी है, and B are the particles which are attracting it from the back side, ये attractive force apply कर रहे हैं, ठीक है। तो जो factor pressure correction में आ रहा है that is actually the attractive force, ठीक है, जिसको ब्रेक करते हुए इसने प्रेशर जो है वो अप्लाई करना है। Now here we have P bar that is determined by the attractive forces between the molecules, right? Now the P bar is proportional to the concentration of A type of the particles and concentration of the B type of the particles, दोनों की concentrations पे depend करता है, right? और अगर हम concentration क्या होती है, number of moles per volume, right? So you can write it like this, A particles के लिए और B particles के लिए you can write it like this, that P bar is proportional to N upon V dot N upon V. C is replaced by N upon V, number of moles per volume, right? Now you can write it like this, दोनों ही N number of moles है, so it can be taken as N square over V square, right? Now here you can do like this, and if we replace the proportionality constant, you can get it, P bar is equal to A N square upon V square. This is the value of P lessened, वो प्रेशर जिसकी कमी आई है, ठीक है,
ये आपके पास में, this will be the what you say the equation, that is the p dash, ये आपने calculate कर लिया यहाँ से. Now what to do next? This a that you have taken as the proportionality constant, it is called the coefficient of attraction per unit volume, right? Coefficient of the attraction per unit volume, and it has a constant value, right? Now remember it, p bar is equal to this. Now we have to place this value in this equation, this one, इस equation में हमें इसे place करना है. Now by putting the value of p bar, you can have the pi is equal to p plus a n square upon v square, right? Now this one is the pressure correction done for the real gas. Now compare the two of the general gas equations. This general gas equation is for the ideal gas, and this general gas equation is for the real gases, as it has been corrected for the value of pressure and volume. Remember, these are the derivations we have done previously in the volume correction and the pressure correction, right? So this is called the van der Waals equation. If we consider that number of moles of the gas which are under experimentation or which are focused, that is equal to 1, so it turns like this, that p plus a upon v square or multiplied by v minus v is equal to RT. This is the van der Waals equation for real gases. Now sometimes you are asked what are the units of A and what are the units of B. Now the units of B are dm cube per mole, number of moles per dm cube of what you say dm cube per mole, that is the unit for B. You know very well that a volume is given in the decimeter cubes, right? Now for the units of A, what you have to do, pressure in atmosphere, volume in dm cube, and number of moles in number n, that is moles in moles, right? Now here you will get the value of A as atm dot dm6, as there is a square on it, and moles minus 2. This one is the unit for the A. These two are the constants in the van der Waals equation. A is related to the attractive force and B is related to the size of the molecule. Remember it, the size of the molecule is very much important, right? जितना ज़्यादा बड़ा size होगा उतना ही ज़्यादा deviation आएगी from the ideal behavior, और जितनी ज़्यादा attractive force होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो ideal gas behavior से deviation आएगी, right? Now this is all about the van der Waals equation. इससे related the numericals which are asked, that is given as an example in your book. 1 mole of methane gas is maintained at 300 kelvins. 300 Kelvin is the temperature. Volume is 250 centimeter cube. Convert this centimeter cube into decimeter cube. Calculate the pressure exerted by the gas under the following conditions: when the gas is ideal, when the gas is non-ideal, and the values of the constants, they are also mentioned here. Now in this, apply one by one both the equations, that is the general gas equation for ideal and the non-ideal gas. Here it is given, the first one, when the gas is behaving ideally, the number of moles is told, that is 1 mole. 300 Kelvin is the temperature, as it is given in Kelvin, so no need to change it. Volume, you have to convert it into dm cube. The value of R according to the units which are mentioned here, that will be taken as the STP value, as the volume is in dm cube taken, right? Or you say the value will be 0.0821. as I told you earlier, you have to remember it well. इसकी ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल throughout याद रहना चाहिए, right? Now dm cube atmosphere per mole. Apply this one on this equation. PV is equal to nRT. Put up the values, you will get your answer, that is 98.52 atmosphere. Now go for the van der Waals equation or the
equation for the real gases. Here you have the formula. You should know it what the equation is. ये आपको properly याद होने चाहिए, ठीक है? Now the values of A and B are mentioned. The other values of the that is the volume and number of moles and value of R and temperature all are mentioned previously. The same you have to use here. Put up the values very carefully. ये थोड़ी सी tricky question है, लेकिन आप you people are the students of the maths. If you are, so you can do it well, right जी? Now this one is the term which comes out, pressure ही आपको calculate करना था. It comes out as 115.2652 atmosphere, right? Now this is how to do the numericals related to that of the van der Waals equation. Next there comes the Dalton's law of partial pressure. Before this, here it is given an other numerical in your exercise related to this van der Waals equation. That's consider it as your homework. Do it in your copies, okay, and then send me a picture of it so that I can get whether you taken out the correct answer or not, right? इसको आप try करना है आप लोगों ने, right जी? It is given in the exercise question number that is given. कौन सा वाला है? Let me to check what is the question number for it. It is question number now here it is question number 16, right? You have to do it in your copies. Do it and then send it to me for the checking, okay? Now next one is the Dalton's law of partial pressure. Dalton's law was given in the 1803. It was discovered by John Dalton, as it is given by the name. वही John Dalton है who gave the theory of the, what to say, कौन सी वाली theory दी थी इसने? Atomic theory दी थी, right? Now here it is given some of the introduction of the Dalton, and then the law is being stated. Before this, consider the air. What do you think about? हम कहते हैं air का ये pressure है 1 atmospheric pressure. हम बार बार पिछले सारे जो lectures हुए हैं gases के, we said that air having pressure, then the STP पे it is considered as 1 atmospheric pressure. Air, what do you think about? It is just a single one component, or in it itself it holds a number of other components in it. हम कहते हैं air is carrying oxygen in it, air is carrying nitrogen in it, air is also carrying some of the carbon dioxide in it, there are present water particles in it, there are also present the inert gases, or some of the pollutants are also being present there. So air is a combination of all these. What do you think about the pressure which is given, that overall this is the pressure of air? क्या ये जो है आपके पास में किस चीज़ का प्रेशर होगा? इसमें we will have the all pressures which are exerted by each and every gas or the particles present in this mixture of air. ठीक है, तो यहीं से आप समझ लें what is the Dalton's law of partial pressure. Each gas in the air is individually exerting its pressure, so that will be termed as a partial pressure. Partial means a part of the pressure, right? Total pressure ka a part, that one is given as the partial pressure, and each gas is participating with its own partial pressure. The pressure of that whole component, that is air, that will be the sum of all these partial pressures, right? So this law is given as that the partial pressures is the total pressure of the mixture of non-reacting gases is the sum of the partial pressures exerted by each of the gases in the mixture. Once again, the law says that the total pressure of mixture of non-reacting gases, now the condition is gases should be non-reacting, otherwise तो वो मिलके कुछ और compound बना देंगी भाई, ठीक है?
So it is the sum of the partial pressures exerted by each of the gases in the mixture. Consider air as a mixture and the different gases in it, that is oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapors, other pollutants, or the helium, argon, etc., etc., etc. All of them, each one is exerting its own pressure. These are the partial pressure, and the combination, the sum of all these pressures will give you the pressure of the air. That is the total pressure, right? Here it comes. The law of pressure says that the partial pressure total is equal to, here it is a mixture. In this container, the total pressure at this moment considered as 6 atm, in which three gases are present, as the picture shows, that helium, which is exerting 1 atmospheric pressure, neon, which is exerting 2 atmospheric pressure, and argon, which is exerting 3 atmospheric pressure. All of them are the individual pressure of each gas, so they are taken as the partial pressures of each gas, right? When we sum up them all, we can say that in this container there is a pressure, that is the total pressure, which is 6 atmosphere by sum up of these gas pressures, right G? Now this is what the law says, right? Now here you can see there are two containers. One is containing helium in it, and this needle indicates that pressure inside is 2 atmosphere, which is exerted by the helium, so it is the partial pressure of the helium exerted there. In the second container there is present only argon gas, and this needle is indicating that the pressure inside is 4 atmosphere, which is exerted only by the argon particles. This will be taken as the individual pressure or the partial pressure. Now we have sum of both of these in one container. What about the total pressure within this container? Now you will add up both the individual or the partial pressure, so the total pressure comes out as the needle is indicating, it will be 6, right? Now this one is another example. As I told you earlier, that air is a combination of number of gases in it. Here it is indicated once again. There are present oxygen, nitrogen, argon, water, and carbon dioxide. The pressures are also being mentioned down there. The pressure of the air will be the sum of all these individual partial pressures, which are exerted by the number of moles of each of the gas present in the separate container, and then when you are going to add them up, the whole will comes out as a single pressure exerted by all these pressures, which are then sum up to give you the pressure of the air. Now come to the next one. Here the relationships between that of the partial pressure and number of moles of the gas, as well as with the mole fraction that are being discussed here. Now look at this. We have a container in which there are three gases are being present. For example, there is present hydrogen, there is present nitrogen, there is present oxygen. Remember it, the gases should be non-reacting. Replace oxygen by means of CH4, right? They are the non-reactive gases, right? At the normal or the ordinary conditions. Now, number of moles of A for hydrogen, number of moles of B for nitrogen, number of moles of C for methane, right? For the three gases separately. Now what about their pressures? Pressure will be like this: pressure exerted by A, pressure exerted by B, pressure exerted by C. By namely, I will say pressure exerted by hydrogen, pressure exerted by nitrogen, pressure exerted by methane, right? Equation you know very well, that is PV is equal to nRT. You can take out pressure from it. For gas A, or for hydrogen, suppose I will write it as P hydrogen is equal to N hydrogen RT upon V. For the second gas, I will write PB is equal to NBRT upon V. Here B can be replaced by nitrogen. For the C, it is PC is equal to NCRT upon V. Now again the C can be replaced by CH4. What about the total of these all? What I will write for them? So I will say, instead of writing the individual moles, I will write N total, representing Na plus Nb plus Nc for all the three gases, moles of all the three gases. And what about pressure? For pressure, I will write Pa plus Pb plus Pc is equal to Pt. So I can write the equation like this.
as all the gases that they are what you say placed in one container. So now the total pressure inside is equal to N total RT upon V. Okay, now what to do now? Divide equation 1 by equation 4. Equation 1 with equation 4. What will you get? Here it is given. Look at this. PA upon PT is equal to NART upon V divided by N total RT upon V. ठीक है, जब आपने इसको किया है डिवाइड, the two equations are divided, so what will you get? You will get there this one. PA is equal to NA upon NT into PT. बाकी सब पैरामीटर्स तो कट जाएंगे, RT कट जाएगा, वॉल्यूम कट जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं कटेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्योंकि वो खाली A के मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स टोटल वो कैंसिल आउट नहीं हो सकते. The equation turns like PA upon PT is equal to NA upon NT, और अगर आप PT को मूव कर दें on the other side, you will get there PA is equal to NA upon NT into PT. I hope you understand what I have done here. आपने इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के लिए और उसके नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपने जो भी रिस्पेक्टिव गैस आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल ए कंसिडर कर रहे हो, तो जो ए का प्रेशर है जो आपने कैलकुलेट किया बाय जनरल गैस इक्वेशन, उसको आप डिवाइड कर दोगे बाय द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस. ठीक है, यहाँ ये आपने काम किया. इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड फॉर द सेकंड गैस. अगर पीबी के लिए करना चाहते हो तो द टर्म ही चेंज होगी, जस्ट पी ए की जगह पी बी आ जाएगा और एन ए की जगह एन बी आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि आपके पास में आफ्टर डिवीजन बाकी क्या बचा है, तो पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन टी मल्टीप्लाइड बाई पी टी, और पी बी के लिए क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन टी मल्टीप्लाइड बाई पी टी, और थर्ड गैस के लिए क्या आ जाएगा, पी सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन टी इंटू पी टी. ये आ जाएगा आपके पास. ठीक है, सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय, अगर मैं इसको बाय वर्ड्स लिख लूं तो आई विल राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. ठीक है, इफ आई कंसिडर n टोटल दैट विल बी अ कांस्टेंट, p टोटल उसको भी आप ले लें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सपोज कर लें आप इसको एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो आपके पास आ जाएगा PA is proportional to NA. Right? Similarly for gas B you can write PB proportional to NB, and for C you can write it PC proportional to NC. Now here it is given the relationship between partial pressure and number of mole fraction of the gases. First of all you should know what is meant by the mole fraction. Mole fraction क्या है? Suppose करें in a container we have 1 mole of the air. अब air is a combination of number of gases in it, और हर गैस के अपने इंडिविजुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके अंदर. उस एक मोल एयर के अंदर दीज आर द फ्रैक्शंस ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर. राइट, तो जो आपके पास में मोल फ्रैक्शन है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट इंडिविजुअल गैस which is present in a mixture which is having a total pressure, total number of moles in it, that is equal to whatever the number of moles. Suppose अगर 1 mole है तो उस मोल की एक छोटी सी फ्रैक्शन होगी जो आपके पास में इंडिविजुअल मोल आएगा of every gas which is present in that mixture. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आपके पास में मोल का एक छोटा सा कंपोनेंट है, पार्ट है हर इंडिविजुअल गैस के लिए. इट कैन नेवर बी वन, यूनिटी नहीं हो सकता क्योंकि ये आपके पास में ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स का पोर्शन होगा, तो इट विल बी अ फ्रैक्शन, ये यूनिटी कभी नहीं हो सकता. ठीक है ना. नाउ हियर हाउ टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल फ्रैक्शन एंड द पार्शियल प्रेशर. तो इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ ये जो लास्ट हमने इक्वेशन डिराइव किया दैट इज P of any individual gas,
that suppose it is PA is equal to the NA upon N total multiplied by P total. ये पीछे अभी हमने इक्वेशन डिराइव की, ठीक है. So rearrange it like this. Partial pressure of gas over total pressure, इसको भी उधर ले जाइए दूसरी साइड पे, is equal to number of moles of gas upon number of moles of the total number of moles. ये आ जाएगा, ये हमने present कर दिया this one, ठीक है. Now the P I represent P individual partial pressure of a gas, ठीक है, individual gas का. P total pressure. Ni जो है that represents, यहाँ पे उसने indicate किया कि Ni represents you the number of moles of that individual gas, ठीक है, over N total. अगर हम Ni over Nt को ले लेते हैं equal to Xi, it is the fraction of moles of this particular gas in the total number of moles, so it will be represented by Xi, right? So यहाँ पे इसकी जगह you can write X. X is the mole fraction, right? So it will be equal to, for example, अगर मैं previously जो gases मैं ले रही थी उन्हीं पे apply करूँ तो मैं इसको relate करते हुए I will say, इसको relate करते हुए this one, इस equation को relate करते हुए I will say P A is equal to X A P total. XA is the fraction of A type of gas which is present in that total number of moles, that, ठीक है, ये आपके पास नहीं आ सकता, right जी? So this is how the mole fraction and partial pressure, they are related. Similarly you can get for the other gases as well. आप कहें PB is equal to XBP total, और ये आपको याद होना चाहिए जब आप XA कह रहे हो तो what does it mean, आपने क्या अप्लाई करना है, that is Na upon N total. ये आपके पास में mole fraction का formula. Now here it shows the collection of gases over water. The collection of water over gases is done in such a way that this is the apparatus shown for the collection of the oxygen. Potassium chlorate when heated in a test tube, you can see here there is a delivery tube which is attached and it is moving inside this gas cylinder, and which is inverted over there within the container having the water in it. This bottle, this jar was also filled with the water before, and now as the oxygen is produced, it is displacing water within this container, and it is occupying the space over here. This is how the gas is collected over. Right now, what do you think about this gas is pure or not? No, it will not be pure. You know very well the water is evaporating at all temperatures. So what will happen? The gas inside this container which is collected, that one will have the sum of the water molecules or water particles along with it. So this is considered as a moist gas. In this moist gas, we say there are two components, one gas particles and the other one, that is the water particles, right? So the both of them will exert pressure. So the total pressure when we have collected the gases over water will be equal to the P gas plus P water. Partial pressure exerted by gas and the partial pressure exerted by water molecules. And if you want to get the dry gas pressure, so what you have to do, P gas is equal to P total minus P water. Pressure water का जो है वो आपको इसमें से subtract करना पड़ेगा. The pressure due to water vapors is called the aqueous tension. Yes, it is called aqueous tension. Right जी? So this is also being calculated over there. Now next one is related to this. You are also being given the numericals in your book, right? So we can make use of the formula, that is this one, which is say values of will be given of the aqueous tension, so you can calculate what the pressure of the dry gas exerted or whatever the pressure of the moist gas, that whole that you can do by means of the use of these two equations. Now here the next application is the respiration at higher altitudes.
अच्छा सोचे ज़रा, नॉर्मली एयर में से रेस्पिरेशन के लिए हमें कौन सी गैस रिक्वायर्ड है? दैट इज ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड। अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा है, अकॉर्डिंग टू दैट, इनसाइड एंड आउटसाइड द लंग्स देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सो दैट ऑक्सीजन कैन मूव इन, लंग्स में जा सके। ठीक है, सो हियर इट इज गिवन द जो प्रेशर आपके पास में रखा है एयर में, दैट वन इज ऑक्सीजन का 159 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि जो लंग्स का है, लंग्स में प्रेशर है 116 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस जो है वो मूव करेगी। ठीक है, सो इस तरह से हम जब सांस लेते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, तो एयर जो है वो अंदर जा रही होती है, मूविंग इनसाइड, तो उसमें ऑक्सीजन इज बीइंग एक्चुअली मूविंग, वही तो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। नाउ व्हाट हैपेंस, हाई एल्टीट्यूड पे गए तो क्या हुआ, एयर प्रेशर कम हो गया, एयर पार्टिकल्स जो माउंटेन्स एरिया में जा रहे हैं, हिली एरियाज में जा रहे हैं, एक्सपीडिशंस के लिए जा रहे हैं, तो क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाते उनको जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है सिलेंडर की, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। क्यों? क्योंकि एयर में प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकम रिड्यूस्ड। अब हमारे लंग्स में तो वही है 116 टोज या जो भी आपके पास में प्रेशर आपके पास में, लेकिन आउटसाइड तो प्रेशर कम हो गया 159 से, तो व्हाट टू डू, अब तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी जाएगी, सफोकेशन होगी। सो फिर उस वक्त प्रेशर कितना है जनाब, तो ये दैट विल बी डिफरेंट। सो व्हाट हैपेंस, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट है जो आपके पास में है ऑक्सीजन सिलेंडर, दैट शुड बी अलोंग, वो होना चाहिए साथ। ठीक है, सांस फूलने लग जाता है, राइट जी, जब आप ऊंची जगह पे चढ़ते हो, जाते हो, मूव करते हो अपवर्ड्स, तो सांस फूलने लग जाता है। सेम इज हियर, जब आप एरोप्लेन में सफर करते हैं, फिर क्या होता है, वो कहता है जो आपके पास में पायलट्स हैं वो फील कर रहे होते हैं प्रेशर ऑफ द एयर, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं आप वंस अगेन। ठीक है, तो आपके पास में एयर कम होती जाती है, फिर क्या होगा, आप इसको, वो कहते हैं उनको नॉन प्रेशराइज केबिन्स में रखा जाता है, सो दैट जहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो आपके पास में ऑक्सीजन का वो मेंटेन किया जाता है 150 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दैट कि वो कंफर्टेबल फील करें। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर रेस्पिरेशन बाय डीप सी डाइवर्स। तो डाउन द वाटर, नीचे भी वो कहता है प्रेशर पानी का वो जो बढ़ जाता है एयर का, दैट इज 5 times मोर देन दैट ऑफ द नॉर्मल प्रेशर। तो ये भी हमारे लंग्स जो है वो फोड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो रेगुलर एयर कैन नॉट बी यूज इन द डाइवर्स टैंक में, वो लेकर जाते हैं साथ में, क्योंकि आपके पास में पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है 795 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब या टोर आपके पास में जाता है जनाब। ठीक है, इतना प्रेशर 5 times अगर आप इंक्रीज कर लेते हैं तो ये आपके पास में प्रेशर आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, रेगुलर एयर कैन नॉट बी यूज इन डाइवर्स टाइम, फिर क्या करेंगे, देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ द प्रोड्यूसर मिक्सचर ऑफ द गैसेस, दे आर बीइंग यूज्ड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके, या हीलियम और ऑक्सीजन को मिक्स करके, हीलियोक्स कहलाता है वो जो मिक्सचर है इसका। ठीक है, दैट इज बीइंग अप्लाइड। सो यहाँ आपके पास में डीप सी डाइवर्स दे यूज टू ब्रीथ अ मिक्सचर ऑफ 96% उसमें नाइट्रोजन होती है और 4% ऑक्सीजन होती है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है विच विल गिव यू योर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द ब्रीदिंग। ठीक है, तो जो स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं वो ये मिक्सचर लेके जाते हैं साथ में। ठीक है, और इसमें आपके पास में क्या होता है जनाब, दे द स्कूबा डाइविंग वाले जो हैं, दे आर ब्रीदिंग अपरेटस जो यूज करते हैं, दैट कंटेन्स अ कंप्रेस्ड एयर टू ब्रीथ, राइट। और जब वो वापस आते हैं ऊपर ऑन द सरफेस, तो बहुत एकदम से वो बहुत टफ एनवायरनमेंट से, जब 5 times आपके पास में ज़्यादा प्रेशर ले रहा था उससे एकदम से लो प्रेशर वाले जोन में आते हैं, तो दे अगेन कैन फील डिस्कम्फर्ट, राइट। सो वो तो लंग्स जो हैं वो तो उनको इतना जो है वो हाई और लो प्रेशर के बीच में वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो तो एक्सपैंड हो जाएंगे, राइट। तो फिर क्या होगा जनाब, मतलब इट कैन डैमेज योर लंग्स। सर्फिंग मस्ट बी डन slowly, gradually, so that the compressed air may escape out from the lungs without causing damage to them. This is how the divers they do, right? तो उस compressed air को उन्हें
ब्रीद आउट करना होता है स्लोली ग्रेजुअली, ठीक है जी। ना हियर वी हैव हाउ डू टाइप सी डाइवर्स दे रिस्पायर ऑन द रिटर्न फ्रॉम सी। तो कहता है उनको जो है जो टैंक्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कंप्रेस्ड एयर वाले, उसमें 80% नाइट्रोजन होती है। एंड हियर इट इज गिवन नाइट्रोजन करती क्या है, नाइट्रोजन स्लोली जब वो भी जा रही है ऑक्सीजन के साथ में इनसाइड द लंग्स, तो दैट इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन द ब्लड, ब्लड में डिसॉल्व होती चली जाती है। तो वो क्या करती है जनाब, वो ब्लड में है तो नॉन रिएक्टिव लेकिन ब्लड में डिसॉल्व तो हो रही है, राइट। तो इफ द डाइवर दैट इज बहुत स्पीड से ऊपर आएगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो तो ब्लड में डिसॉल्व ऑलरेडी थी, तो वो तो ब्लड में बबल्स बनाएगी, ब्लड में बबल्स बनाएगी एंड दैट विल बिकम अ पेनफुल सिचुएशन। इसको कहते हैं देयर बेंड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, इन बेंड्स को अवॉइड करना है, इसलिए वो कहता है स्लो सर्फिंग विल बी डन, ठीक है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है कि ब्लड में बबल्स बन जाए, ठीक है। तो इनको स्लोली ग्रेजुअली दे कम्स अप विद व्हाट यू से द कंप्रेस्ड एयर को स्लोली रिलीज करते हुए आएंगे और फिर इनको डीकंप्रेस्ड चैनल्स में रखा जाता है जहाँ पे स्लोली ग्रेजुअली जो है नाइट्रोजन इनके ब्लड से आउट होती है, स्किप होती है और फिर दे फील द कंफर्टेबल वन, राइट। दिस इज all about today's lecture. It is enough. So we'll do the Graham's law in the next one lecture. Okay, Allah Hafiz.